Hello everyone and I welcome you all to Guru Mantra classes. तो आज हम करेंगे class 10 Civics chapter 3 that is democracy and diversity. So let's start with the overview first. Basically हमने last chapter में पढ़ा था कि how power can be distributed to accommodate linguistic and regional diversities. But language और region ही ऐसे features नहीं है जो एक person को distinct identity देते हैं. कभी कभार बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक पर्सन अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ सोशल पोजीशन विच ही और शी एक्वायर्स इन अ स्ट्रक्चर या फिर अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्लास, कास्ट, ट्राइब एसेट्रा. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो डेमोक्रेसी, हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हम पहले पढ़ेंगे आ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स. So the pictures on this page depict an important landmark in the history of the civil rights movement in the United States. अब ये पहले हम पढ़ते हैं civil rights movement क्या थी. तो basically ये जो movement है it happened between 1954 to 1968 और इसमें जो था वो एक ही event नहीं था. It was a series of events and a set of events and reform movements which aimed at abolishing लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स. क्या होता है जो आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं वो तो मतलब इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय लॉ, लेकिन पहले कभी कभार जो लॉ ही सपोर्ट करता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो सिविल राइट्स मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था टू एबॉलिश दैट पर्टिकुलर लीगल स्टेटस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन and it was led by Martin Luther King Jr. This movement practiced non-violent methods of civil disobedience against racially discriminatory laws and practices. African American, that is African American क्या होता है basically like Black American or Black are the terms used for refer mainly to the descendants of African who were brought into American as slaves between the 17th and early 19th century. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे पहले स्लेव ट्रेडिंग होती थी. लाइक तब हम भी जैसे कॉलोनी थे ब्रिटिश के अंदर, तो हमारे यहाँ से भी कैसे ट्रेडिंग होती थी. तो इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस ड्यूरिंग दैट टाइम. तो लेट्स मूव ऑन टू दी स्टोरी. तो बेसिकली ये जो पिक्चर है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इट रिप्रेजेंट्स द मेडल सेरेमनी ऑफ द 200 meters race in the 1968 Olympics held at Mexico City. The two men standing with clenched fists upraised and heads bowed while the American national anthem was played are the US athletes Tommy Smith and John Gallows. They are African Americans. ये जो दोनों दिख रहे हैं ना आपको, ये और ये. So basically he won the gold award and he won the bronze award, that is medals, and they received the medals wearing black socks and no shoes to represent black poverty. ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट रखना है स्टोरी में कि उन दोनों के नाम क्या थे, उन्होंने कैसे जेस्चर रखा था ड्यूरिंग द मेडल सेरेमनी, फिर उन्होंने क्या क्या पहना था, लाइक दे वोर ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज टू सिम्बलाइज ब्लैक पॉवर्टी, ये सब. एंड विद दिस जेस्चर दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएस. अभी भी हम बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जैसे रिसेंटली जॉर्ज फ्लॉयड का कैसे आया था कि हाउ ब्लैक्स आर डिस्क्रिमिनेटेड और के एक बहुत ही लार्ज स्केल मूवमेंट हुई थी ब्लैक्स लाइफ मैटर. बेसिकली आज भी हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं और प्रीवियसली भी हम करते थे ना. द ब्लैक ग्लव्ड एंड रेज्ड क्लेंच्ड फिस्ट वर मीन टू सिंबलाइज ब्लैक पावर. ये देख रहा ब्लैक ग्लव्स पहने हैं. द सिल्वर मेडलिस्ट व्हाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन वोर अ ह्यूमन राइट्स बैच ऑन हिज शर्ट ड्यूरिंग दिस सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट टू द टू अमेरिकन्स. ये इसने बैच पहना था. ही डिडंट like do the same gesture. Do you think that Carlos and Smith should have raised an internal matter of American society in an international forum? Would you say that what they did was political? Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined in the gesture of protest? If you were in Norman's place, what would you do? देखो ये दोनों इसलिए रेस कर रहे हैं because they are of like they are African American. While जो second आया that is Peter Norman, he is in white, but वो इसलिए पहना है because he is supporting them and of course supporting all of these like the movements against indiscrimination is definitely a good cause. So अगर मैं होती इसके place में I would have definitely done the same thing. अब let's see कि आगे क्या हुआ.
तो द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड बोथ ऑफ देम, जिन्होंने रजिस्टर किया था, गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्प्रिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये देखो, उनको लगा उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाया। ऑफ कोर्स अगर कोई भी इतनी इंटरनेशनल और इतने बड़े लाइक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट में ऐसा कोई करेगा तो इट वुड ड्रॉ अटेंशन ऑफ ऑल द पीपल, और उनका तो पूरा डीफेम हो जाएगा हु ऑर्गेनाइज दिस उस कंट्री का। तो उन्होंने लाइक मैनिपुलेट करके बोला कि यस, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने बोला कि यस दे आर गिल्टी बिकॉज दे मेड अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट विच इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द organization. Their medals were taken back. Back home, they were subjected to a lot of criticism. Norman too suffered for his action and was not included in the Australian team for the next Olympic. जो जिसने support किया था उसको भी suffer करना पड़ा. But their action succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in the US. Recently, the San Jose, sorry, it is pronounced as San Jose, State University, of which they were former students, honored them and installed their statue in the university campus. When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers at his funeral. तो बेसिकली ये बताता है कि स्टार्टिंग में तीनों ने सपोर्ट किया, फिर दे फेस्ड हार्डशिप्स, बहुत सारी हार्डशिप्स फेस की, सिचुएशंस फेस की, लेकिन लास्ट में तब व्हेन दी सेकेंड वाला जो था पीटर नॉर्मन, ही डाइड, देन ऑल्सो दे टू ऑल्सो केम अप एंड शोड देयर सपोर्ट। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज और डिविजन्स की। तो अब जो फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सीधा आ सकते हैं स्टोरी में, तो बेसिकली आप डिवाइड कर सकते हो, पहले तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो और फिर इम्पैक्ट और रिजल्ट में आप बता सकते हो कि हाउ दे वर सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और क्या क्या उनके करियर पे इफेक्ट्स पड़ा था। अब हम मूव करते हैं डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज और डिविजन्स पे। तो बेसिकली द एथलीट्स इन द अबव एग्जांपल वर रिस्पॉन्डिंग टू सोशल डिविजन्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज, बट does that happen only in societies which have racial divisions? In the previous two chapters, we already have noted some other forms of social division. हमने पढ़ा हुआ है बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे रीजनल और उनकी कम्युनिटी मतलब डाइवर्स कम्युनिटी की वजह से there were tensions between the two. In the case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different language. In Sri Lanka, we noted linguistic as well as religious differences. उन्होंने बोला था श्रीलंकन गवर्नमेंट कि वो बुद्धिज्म फोस्टर करेंगे, बट तमिलियंस वर नॉट रेडी विद दैट डिसीजन, दे वर नॉट एग्रीइंग। Thus, social diversity can take different form in different societies. अगर ये स्टेटमेंट आए कि explain the statement, so you can like supplement your answer along with the examples of Belgium and Sri Lanka. Now, origins of social differences. जो social differences are, they are mostly based on accident of birth. जैसे हम चूज नहीं करते कि हम कौन सी कास्ट में बॉर्न होंगे, कभी कभार दे आर बेस्ड इन बर्थ, जैसे कास्ट, जेंडर, रिलीजन। अब हम बात करते हैं सेकंड वाली, सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन चॉइस। देखो पहले मैं आपको ये पहला पॉइंट ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। जैसे वी आर मेल, फीमेल, टॉल, शॉर्ट, हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्प्लेक्शन, हैव फिजिकल एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज। तो आधे बर्थ से है, बट हाफ ऑफ देम आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर चॉइसेस। जैसे ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस का। अगर क्वेश्चन आए एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स एंड सप्लीमेंट देम विद द एग्जांपल एज वेल एज एक्सप्लेनेशन। सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं दैट सम पीपल डोंट बिलीव इन गॉड व्हाइल सम पीपल बिलीव, एंड सम पीपल चूज टू फॉलो रिलीजन अदर देन द वन इन विच दे वर बोर्न। Most of us choose what to study, which occupation to take up, which games should be taken, और ये सब। So all these groups, like the social groups which are formed, are based on our choices. अब जो हर social difference है वो social division नहीं lead करता। जैसे let's say कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो it's a difference, but it does not lead to social division कि only tall people can do this job, या फिर हम एक कंपनी में बस इसको ही एम्प्लॉय करेंगे। Of course कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर लाइक ब्यूटी एंड मॉडल कंपनीज, बट जनरली ऐसा कोई सोशल डिवीजन नहीं होता है। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर, बट दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। People belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their groups. In the instance above, हम यहाँ पे रेफर करें मेक्सिको स्टोरी वाली, Carlos and Smith were similar in one way. Why? Because they were African American
and thus different from Norman, who was white and he was Australian by citizenship. But they were also all similar in other ways, that they were all athletes who stood against racial discrimination. तो कभी कभार जो डिफरेंस है ना वही हमें यूनिटी लाते हैं, और हर ग्रुप में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होते हैं, और तब वो मिलते हैं तो दे डोंट remind themselves of the boundary between the two. Differences होते हैं but similarities तब आती है तो they forget about the boundary and come united to fight for a cause. It is fairly common for people belonging to the same religion to feel that they not belong to the same community because their caste or sect is very different. अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन है उनकी सेम कास्ट हो सकते हैं और वो दे फील क्लोज टू ईच अदर। ऐसे ही जो रिच और पुअर पर्सन होते हैं फ्रॉम द सेम फैमिली वो इतने क्लोज रिलेशन नहीं रख सकते बिकॉज दे फील दे आर डिफरेंट, वो रिच है मैं पुअर हूँ। हेंस हमारे पास ना एक ही आइडेंटिटी नहीं है, वी हैव मेनी आइडेंटिटीज, जेंडर, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, इन सब पे बेसिस पे, एंड वी बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप, हेंस वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये स्टेटमेंट आएगी तो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट कि डिफरेंसेस होते हैं, सिमिलैरिटीज होते हैं, और ये सब एग्जाम्पल्स देके यू कैन सप्लीमेंट योर आंसर। अब हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस के बारे में। So basically social division takes place when some social difference overlap with other difference, and the difference between the whites and the blacks becomes a social division in the US because the blacks tend to be poor, homeless, and discriminated against. In our country, Dalits tend to be poor and landless. They often face discrimination and injustice. Situations of this kind produce social divisions. When one kind of social difference becomes more important than the other, and people start belonging that they feel to different communities. देखो क्या होता है बेसिकली, हम पहले पढ़ रहे हैं ओवरलैपिंग डिफरेंस। जो ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये है ओवरलैपिंग के बारे में, हम सोशल क्रॉस कटिंग हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ओवरलैपिंग में, जो सोशल डिविजन है वो कब होती है, तब जो बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस होते हैं जैसे रिच पुअर के बीच में, कास्ट जैसे लेट्स से जो ऊपर हायर कास्ट है जो लोअर कास्ट है उन दोनों के बीच में तब जो डिफरेंस है वो ओवरलैप होने लगता है, तब आती है हमारी सोशल डिविजन। जैसे यूएस में बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स, इंडिया में दलित्स। तो और जो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस है ना वो बहुत ही डीप सोशल डिविजन्स और टेंशन्स की पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इंडिया में पास्ट में एक बहुत ही रिजिड कास्ट सिस्टम था, ठीक है। तो जैसे जो लास्ट वाले थे लाइक दे वर कॉल्ड हरिजन्स, दे वर कॉल्ड अनटचेबल्स। तो जो उनका मतलब इम्पैक्ट था अभी भी वो प्रोसेस करता है, अभी भी कहीं ना कहीं यू वुड नोटिस कि यस दैट माइंडसेट वो सारी एक्टिविटी रहती है, इसलिए वो अभी तक बैकवर्ड है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा। If social differences cross-cut one another, it is difficult to pit one group of people against the other. It means that groups that share a common interest on one issue are likely to be in different sides on a different issue. Consider, इसमें हम पहले पढ़ रहे cross-cutting difference के बारे में. So first I will read, then I will explain you. Consider the cases of Northern Ireland and Netherlands. Both are predominantly Christian, but divided between Catholics and Protestants. ये दोनों branch है Christianity की. In Northern Ireland, class and religion overlap with each other. If you are Catholic, you are also more likely to be poor and you may have suffered a history of discrimination. In the Netherlands, class and religion tend to cut across each other. Catholics and Protestants are about equally likely to be poor or rich. The result is that Catholics and Protestants have had conflicts in Northern Ireland while they do not so in Netherlands. Overlapping social differences create possibilities of deep social divisions and tensions, while cross-cutting social differences are easier to accommodate. देखो, cross-cutting basically क्या होता है कि जो groups है, like let's say groups have a common interest on one issue and they may have a different interest on different issue. जैसे एग्जाम्पल इसमें जो लिखा है, पहला हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में। तो बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या है, जो प्रोटेस्टेंट्स है दे आर वेरी वेल ऑफ एज कम्पेयर टू कैथोलिक्स। मतलब प्रोटेस्टेंट्स जो है वो ऊपर है और जो कैथोलिक्स है वो है नीचे। लेकिन जो नीदरलैंड्स है उसमें क्या है, दोनों ही इक्वल है।
ठीक है। इसलिए कभी कभार इसलिए क्या है, ओवर जो क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस है दे आर वेरी मच इजियर टू एकोमोडेट एज कम्पेयर टू ओवरलैपिंग वाले। क्यों? क्योंकि उसमें ना बहुत ही डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स हो जाती है जो बहुत ही मुश्किल होता है टू इरोड फ्रॉम दी सोसाइटी। Social divisions of one kind or another exist in most countries. It does not matter whether the country is small or big. India is a vast country with many communities. Belgium is a small country with many communities. Even those countries such as Germany and Sweden that were once highly homogeneous. Homogeneous मतलब एक ही kind के people रहते हैं, जैसे उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, एक ही कल्चर फॉलो करते हैं, एक ही लैंग्वेज, वो सब are undergoing rapid change with the influx of people from the other parts of the world. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं जर्मनी स्वीडन में, इसलिए अब उनका होमोजेनियस कल्चर नहीं रहा, बल्कि इट इज शिफ्टिंग टू हेट्रोजेनियस, दैट इज डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं. Migrants bring with them their own culture and tend to form a different social communities. Migrant मतलब जो एक रीजन से दूसरी रीजन मूव करता है. In this sense, most countries of the world are multicultural. और इंडिया इज द वेरी मस्ट इज द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है और इतना रिच कल्चर है. अब हम मूव करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स पे. तो बेसिकली क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव. इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में. अब क्यों? पहले तो हम थोड़ा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं. So democracy involves competition among various political parties, and their competition tends to divide any society. If they start competing in terms of some existing social division, it can make social division into political division and lead to conflict, violence, or even disintegration of a country. इसमें हम दे सकते हैं श्रीलंका का एग्जाम्पल. देखो, यहाँ है भाई हमारे सिन्हाला जो है मेजॉरिटी में, यहाँ हमारे तमिल जो है माइनॉरिटी में. गवर्नमेंट ने किया इसको फेवर, ठीक है, अब सारी अपनी इम्पोज इस पे कर दी, तो इसने भी अपना मूवमेंट शुरू कर दिया लिखना. फाइनली क्या हुआ, सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये हो गया इसमें सिविल वॉर. और जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल भी देती हूँ. लेट्स से जैसे इंडिया में क्या होता है इलेक्शंस के टाइम, तो जैसे इंडिया में इलेक्शंस के टाइम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी दे यूज लाइक कास्ट, रेस, इन सबको यूज करती है ताकि जो एक सेक्शन है ना पर्टिकुलर, उधर से वोट एक्वायर कर सके. अब दिस हैज हैपेंड इन मेनी कंट्रीज. अब रेंज ऑफ आउटकम्स, टेक द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वी रेफर टू अबव. दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज बीन फॉर मेनी years the site of violent and bitter ethno-political conflict. अब हम पढ़ेंगे क्यों. देखो, जो इसके पॉपुलेशन है ना वो टू मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी में डिवाइडेड है. जो 53% है वो है प्रोटेस्टेंट, 44% है कैथलिक्स. और जो कैथलिक्स है दे वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज हु डिमांडेड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अ प्रीडोमिनेंटली कैथलिक कंट्री, while the Protestants were represented by the Unionists who wanted to remain with the UK, which is predominantly Protestant. तो दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहते हैं. Hundreds of civilians, militants and security forces were killed in the fight between both of them and between the security forces of the UK and the nationalists. It was only in 1998 that the UK government and the nationalists कौन थे, जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स था, जो कैथलिक्स को सपोर्ट करते थे दे वर नेशनलिस्ट, reached a peace treaty after which the latter suspended their armed struggle. In Yugoslavia, the story did not have a happy ending. Political competition along religious ending ethnic lines led to the disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries. तो आप इसमें दोनों एग्जाम्पल दे सकते हो. एक की तो हैप्पी एंडिंग हुई यूके वाले की, दूसरा जो यूगोस्लाविया था उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई क्योंकि इट लेड टू डिसइंटीग्रेशन. तो इसलिए इसमें हम पढ़ रहे हैं कि हाउ जो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन है उसके इम्पैक्ट और उसके आउटकम्स कैसे हो जाते हैं. Such examples lead some people to conclude that politics and social divisions must not be allowed to mix. They think that it would be best if there are no social divisions in any country, and if they exist, they must never be expressed in politics. At the same time, every expression of social divisions in politics does not lead to such disasters. उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है तो एक दो एडवांटेजेस भी होंगे, हम अभी उसके बारे में पढ़ेंगे.
We have already seen that social divisions of one kind or another exist in most countries of the world. Wherever they exist, these divisions are reflected in politics. Basically, politics एक ऐसा पार्ट है जो सब कुछ कवर करता है, तो उसमें divisions पक्का ही express होंगे. In a democracy, it is only natural that political party would talk about these divisions, making different promise to different communities and look after due representation of various communities and make policies to redress the grievances of the disadvantaged communities. तो कभी कभार ना वो माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं या फिर कभी कभार वो अपनी पर्टिकुलर कास्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले को टारगेट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था. The social divisions affect voting in most countries. India maybe it affects. People from one community tend to prefer some party more than others. Let's say Hindu BJP को prefer करेंगे, Muslims जिसमें मुस्लिम लीडर्स है उसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं. It's not a compulsion but कर सकते हैं. In many countries there are parties that focus only on one community. Yet all these does not lead to disintegration of the country. Definitely जैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट कम्युनिटीज को टारगेट करिए, बट अभी तक डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई. एंड व्हाई वुड दैट हैपन? अब हम बात करेंगे 3 डिटर्मिनेंट्स के बारे में. तो इसमें हम 3 डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला है रोल ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा है रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन पार्टी इन रेजिंग द डिमांड्स ऑफ कम्युनिटीज, तीसरा है रोल ऑफ गवर्नमेंट. मैं हेडिंग्स मार्क करते जाऊंगी एज वी प्रोसीड विद इट. So basically, 3 factors are important in deciding the outcome of politics and social divisions. पहला है the outcome depends on how people perceive their identities. That is, ये हो गया हमारा role of identity. मैं notes description box में upload कर दूंगी, तो you can go through them once. They will help you to formulate your answers. Up. If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. इसका मतलब कि वो अपने individual के बारे में सोचते हैं. They do not think of others. So, and as long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestant, the differences were difficult to reconcile. But it is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. कि हाँ ठीक है कि कंट्री में सोशल डिविजन हो सकते हैं, बट एट लास्ट वी आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वी शुड मेंटेन अ यूनिटी. अगर वो ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, जो डाइवर्सिटी है इट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन अ एफिशिएंट मैनर एंड विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स. जैसा बेल्जियम में हुआ था. अ मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियंस नाउ फील दैट दे आर as much Belgian as they are Dutch or German speaking, which helps them to stay together. This is how most people in a country see their identity. वो हिंदू मुस्लिम होने से पहले बोलते हैं they are Indian. You would see like caste नहीं बोलते, but they are very much of like वो बहुत ही ज़्यादा patriotism शो करते हैं. डिफरेंट अपनी कास्ट वगैरह दे वो सेकेंडरी रखते हैं, बट द टर्म इंडियन दे कीप इट एट फर्स्ट पोजिशन. This is, they think of themselves as Indian as well as belonging to a state or language group or a social or religious community. अब हम पढ़ेंगे second determinant के बारे में, which is it depends on how political leaders raise the demands of any community. देखो, it is easier अगर जो demands let's say community raise करिए वो easy होगा अगर वो constitution के framework के अंदर होगा और वो किसी दूसरे कम्युनिटी को डैमेज नहीं करेगा या फिर उन्हें ऐसा फील नहीं करवाएगा कि दे आर माइनॉरिटी, दे आर गेटिंग एलिनेटेड फ्रॉम द कंट्री. एंड डिमांड फॉर, अब हम पढ़ रहे श्रीलंका के बारे में. द डिमांड फॉर ओनली सिन्हाला वाज एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ तमिल, ऑफ कोर्स, and same was in Yugoslavia. The leaders of different ethnic communities presented their demands in such a way that these could not be accommodated within a single country. So बेसिकली हमें वी नीड टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर आवर ओन कि यस नहीं कि हम यही रूल करेंगे, एक ही कम्युनिटी एक कंट्री को रूल करेगी. नहीं, वी नीड टू अकोमोडेट डिफरेंसेस एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस इन फॉर अ स्टेबल इन अ वेल मेंटेन्ड कंट्री जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो बल्कि पीस हो. अब हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर के बारे में कि हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप. अब हमने बेल्जियम और श्रीलंका में पढ़ा है कि कैसे कैसे गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड किया. बेल्जियम में दे वर विलिंग टू शेयर पावर, श्रीलंका में दे वर नॉट विलिंग टू शेयर द पावर. इफ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर एंड accommodate the regional demands of minority community,
social divisions become less threatening for the country, as happened in the Belgium case. But अगर वो suppress करेंगे minority की demand, तो basically क्या होगा, national unity नहीं होगी, civil war, violence, conflicts और even disintegration of country हो सकता है. Thus, the assertion of social diversities in a country need not to be seen as a source of danger. In a democracy, political expression of social divisions is very normal and can be healthy. हमेशा disintegration conflicts नहीं होंगे. कभी कभार they are healthy to represent the demands of various communities, but not at the cost of others. This allows various disadvantaged and marginal social groups to express their grievances and get the government to attend to these. Expression of various kinds of social divisions in politics often results in their cancelling one another out and thus reducing their intensity, which leads to strengthening of democracy. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्कर में कि what leads to strengthening of a democracy with respect to democracy and diversity. So you can write this line. But a positive attitude towards diversity and a willingness to accommodate it do not come about easily. वो अपने आप नहीं आती है. कभी कभार जो लोग हैं they feel deprived, they feel discriminated because उनको injustice feel होना होता है. जैसे हमारे country में दलित्स of course कभी कभार they feel very depressed कि नो भाई they were treated as untouchable. अभी भी बहुत सारे instances होते हैं जहाँ लोगों को temple entry नहीं मिलती, well से वो पानी नहीं ले सकते, ये सब. And such a fight often takes the democratic path, voicing their demands in a peaceful and constitutional manner and seeking a fair position through elections. यही देखो दलित कम्युनिटी बहुत डिप्रेस्ड हो रही थी, दे वर नॉट अलाउड सम एनीवे, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, रिजर्वेशन. अब जो रिजर्वेशन है इट हैज प्रोवाइडेड अ वॉइस फॉर देम इन इलेक्शंस, इन इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट. जैसे एजुकेशन के स्पेयर में उनके लिए रिजर्वेशन है, जॉब्स के मामले में, तो इट हैज प्रोवाइडेड देम विद इक्वालिटी. बट sometimes social differences can take the form of unacceptable level of social inequality and injustice. The struggle against such inequality sometimes takes the path of violence and defiance of state power, जिसे श्रीलंका के केस में हुआ था. However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity. अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी टाइप की गवर्नमेंट नहीं आई which is more efficient than democracy. It is the most efficient government to accommodate diversity and to fight for recognition as compared to dictatorship and monarchy और ये सब. तो अब हम करते हैं अपना चैप्टर कंप्लीट. मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी. मेक श्योर यू रीड देम वंस and thank you for watching the video. If you like the video, please share, subscribe and comment on the channel, and thank you so much.